Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about optical fiber classifications. So let's start and let's see the classification of optical fiber. And here we can classify the optical fiber on the basis of various parameters. So let's see the classification of optical fiber on the basis of refractive index profile. And according to refractive index profile, there are two types of optical fiber. First one is step index optical fiber and second one is graded index optical fiber. And again, when we classify optical fiber on the basis of modes, then it is of two types. First one is single mode fiber and it is denoted as SMF, and second one is multi-mode fiber and it is denoted as MMF. And according to material used to manufacture optical fiber, uh, it is classified in three categories. First one is glass fiber, and third one is plastic fiber, and sorry. First one is glass, second one is plastic, and third one is plastic clad silica. That means PCS. So these are the classification of optical fiber on the basis of various parameters. And so let's first see the classification basing on refractive index profile, and according to which first type is step index fiber. And what is step index fiber? The refractive index of the core is constant along the radial direction and sudden falls to a lower value at the core cladding boundary. That means this means in step index fibers जो कोर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वह रेडियल डायरेक्शन में कांस्टेंट रहती है और इसकी वैल्यू कोर क्लेडिंग इंटरफेस पे सडनली डिक्रीज होकर क्लेडिंग मटेरियल के की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाती है. द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग इज कांस्टेंट और क्लेडिंग मटेरियल की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है. Let's see second type of optical fiber on the basis of refractive index profile is graded index fiber. In graded index optical fiber, the core is core material refractive index is not constant but varies smoothly over the diameter of the core. That means graded index ऑप्टिकल फाइबर में कोर मटेरियल की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होती बल्कि स्मूथली डायमीटर की डायरेक्शन में वेरी करता है और इसकी वैल्यू इट हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली टुवर्ड्स द आउटर एज ऑफ द कोर. मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम कोर की सेंटर पे होती है और ग्रेजुअली आउटवर्ड डायरेक्शन में आने पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर मटेरियल की डिक्रीज होती जाती है. And at the core cladding interface, the refractive index of the core matches with the refractive index of the cladding. The refractive index of the cladding is constant. मतलब in both cases, that means in step index fiber and in graded index fiber, cladding की refractive index हमेशा constant रहती है. This shows the variation of refractive index of core and cladding materials in both type of optical fiber. This shows the variation of refractive index in step index optical fiber. Here we can see that this part shows the refractive index of core. Here this is constant and its value is n, and this part shows the cladding and its refractive index is n2 and it is n2 is also constant. And in graded index fiber this part is core and its refractive index is maximum at the axis, and एक्सिस के बाद ये ग्रेजुअली कोर क्लेडिंग इंटरफेस की ओर आने पर ये डिक्रीज होते जा रहा है, ये दिख रहा है.
तो ये फिगर हमें ये इस फिगर से हमें ये पता चलता है कि कोर और क्लैडिंग में मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार वेरी होती है दोनों टाइप के ऑप्टिकल फाइबर में। ये हमें इस फिगर से क्लियर हो रही है। नाउ यदि हम जो मोड्स ऑफ लाइट प्रोपगेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन देखें तो हमने पहले देखा कि सिंगल मोड एक फाइबर होती है, एक मल्टी मोड। तो पहले हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के बारे में देख लें। तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या है? सिंगल मोड हैज अ स्मॉलर कोर डायमीटर एंड कैन सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन एंड इट इज सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। जो सिंगल मोड होती है वो स्टेप इंडेक्स फाइबर होती है, वो सिंगल मोड में भी आती है। तो ये सिंगल मोड जो है स्टेप इंडेक्स फाइबर ही होती है। A single mode step index has a very thin core of diameter of 8 to 12 micrometer and it is usually made of germanium doped silicon. The core is surrounded by a thick cladding of lower refractive index. The cladding is composed of silica lightly doped with phosphorus oxide. The external diameter of the cladding is of the order of 125 micrometer and the fiber is surrounded by an opaque protective layer that is called sheath. The refractive index of the fiber changes suddenly at the core cladding boundary. The variation of the refractive index of a step index fiber as a function of radial distance be mathematically represented as nr is equal to n1 when r is less than a inside core and nr is equal to n2 when r is greater than a in cladding, where A is the where in this representation A is the radius of core. In single mode optical fiber, light travels along a single path, that is along the axis of fiber. It is the zero order mode that is supported by single mode fiber. That means हम ये कर सकते हैं सिंगल मोड फाइबर में लाइट रोज जो है को ऑप्टिकल फाइबर की एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है और उसे हम जीरो ऑर्डर मोड कहते हैं। बोथ डेल डेल इज मींस इंडेक्स डिफरेंस या फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कहते हैं एंड न्यूमेरिकल एपर्चर आर स्मॉल फॉर सिंगल मोड fibers. This small value is obtained by reducing the radius and making del to be small. Low Na means low acceptance angle and therefore light coupling into the fiber becomes difficult. Costly laser diodes are needed to launch light into single mode fiber. दैट मीन्स चूंकि इसकी रेडियस डायमीटर ऑप्टिकल फाइबर की कम होती है इसलिए इसे लाइट को लॉन्च करना टफ वर्क होती है और इसके कारण इसमें लेजर डायोड का ही यूज किया जाता है। बाकी जो ब्रॉड सोर्स है लाइट की उसको हम लाइट लॉन्चिंग के लिए यूज नहीं कर सकते यहाँ पर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में। एंड दिस शोज द structure of single step index single mode fiber. Here this part A shows the variation of refractive index of single mode step index fiber and this is the single mode step index fiber. Here this part shows the core and this part shows the cladding. And here we can see that the core radius of core is 8 to 12 micrometer and cladding's diameter is 125 uh, micrometer. Let's see the characteristics of this step index single mode fiber. It has a very small core diameter, typically of about 10 micrometer. Already we have seen this. Its numerical aperture is very small. Its numerical aperture is small and it supports only one mode in which the entire light energy is concentrated. A single mode step index fiber is designed to have a V number between 0 and 2.5.
4. Because of a single mode of propagation, loss due to intermodal dispersion does not exist. With careful choice of material, dimensions and wavelength, the total dispersion can be made extremely small. The attenuation is least. The single mode fibers carry higher bandwidth than multimode fibers. It requires a monochromatic and coherent light source. Therefore, laser diodes are used along with single mode fibers. Let's see some advantages. Advantages of this optical fiber, and its advantages is no degradation of signal, and low dispersion makes the fiber suitable for use with high data rates, and single mode gives higher transmission rate and up to 50 times more distance than multimode. That means single mode ऑप्टिकल फाइबर में चूंकि लॉस नहीं होती, जिस कारण से इसे मल्टीमोड फाइबर की तुलना में 50 टाइम्स मोर डिस्टेंस तक हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं. Highly suited for communications. Now let us see some disadvantages of single mode step index fiber. Manufacturing and handling of single mode fiber are more difficult, and the fiber is costlier, थोड़ा महंगा होता है ये, and the launching of light into fiber is difficult, coupling is difficult, and these are the some disadvantages of single mode step index fiber. Now let's see its application. This type of optical fiber is used for in underwater cables. Now let us see multimode fiber. A multimode fiber has a larger core diameter and supports many number of modes. मल्टीमोड फाइबर की कोर डायमीटर बहुत अधिक होती है और इसमें बहुत सारे मोड्स प्रोपोगेट हो सकते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स. मल्टीमोड फाइबर भी दो प्रकार के हैं, एंड फर्स्ट वन इज स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर एंड सेकेंड वन इज ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर. लेट अस सी स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड fiber. Multimode step index fiber is very much similar to the single mode step index fiber, except that its core is of a larger diameter. The core diameter is of the order of 50 to 100 micrometer, which is very large compared to the wavelength of light. The external diameter of cladding is about 150 to 250 micrometer, and multimode step index fiber allows finite number of guided modes. The direction of polarization, alignment of electric and magnetic fields will be different and rays of different modes. Many zigzag paths of propagation are permitted in multimode fiber. The path length along the axis of the fiber is shorter, while the other zigzag paths are longer. The lower order modes reach the end of the fiber earlier, while the higher order modes reach after some time delay. Already, these points we have discussed in our previous video. These points, and this shows the structure of step index multimode fiber. Here this shows the variation of refractive index in optical fiber, and here we can see this is the two modes are propagating through optical fiber, and this shows the diameter of optical fibers core and cladding part. Now let us see the characteristics of step index multimode fiber. It has a larger core diameter, typically ranging between 50 to 100 micrometer. The numerical aperture is larger and it is of the order of zero point 0.3. Larger numerical aperture allows more number of modes, which causes larger dispersion. That means क्योंकि हम देखें सिंगल मोड फाइबर में डिस्पर्सन नहीं होती है, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा मोड्स ट्रेवल करती है, जिसके कारण यहाँ डिस्पर्सन अधिक होती है. The dispersion is mostly intermodal, and attenuation is high. Incoherent sources like LEDs can be used as high sources with
as a light sources. Sorry, ये this one is the light sources with multimode fibers. इस प्रकार के जो स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर है उसमें हम जो इनकोहेरेंट लाइट सोर्स है जैसे एलईडी है इसको भी हम लाइट सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं. Let's see some advantages. The multimode step index fiber is relatively easy to manufacture and is less expensive. Launching of light into fiber is easier, therefore LED or laser source can be used. It is easier to couple multimode fibers with other fibers. Let's see some disadvantages. It has a smaller bandwidth. Due to higher dispersion data rate, it rate is lower and transmission is less efficient. It is less suitable for long distance communications. Let us see some example applications, and this type of optical fiber is used in data links. Now let us see about graded index multimode fiber. Graded index multimode fiber is a type of optical fiber in which refractive index is higher at the axis of the core and then it decreases gradually towards the core cladding interface. इस ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर वाले पार्ट के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सेंटर पे एक्सिस पे ज़्यादा होती है, उसके बाद एक्सिस से बाहर की ओर आने पर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे-धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है और कोर क्लेडिंग इंटरफेस पे उसकी वैल्यू क्लेडिंग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वल हो जाती है. अब इस प्रकार जो कोर मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो वेरिएशन होती है उसको हम इस फंक्शन आर के फंक्शन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं. एन आर इज इक्वल टू n1 square root of 1 minus 2 del r by alpha r by a whole to the power alpha. यहाँ r is less than a inside core, less than a है, r की वैल्यू less than a है, that means inside core, and nr is equal to n2 when r is equal to r is greater than a in cladding. That means cladding ये ऑप्टिकल फाइबर की टोटल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज के लिए ये फंक्शन है. इसमें ये वाला पार्ट जो है कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है एंड दिस वन शोज द refractive index of cladding material. Here N1 is what? N1 is the refractive index of core material at axis of the core, and R is a dimensionless parameter and A is the A is the radius of the core and R is the distance from the distance from the core, and del is the refractive index change. Hence, numerical aperture will be Na is equal to square root of n square r minus n2 square, and when we put the value of nr, then we get n1 2 del whole to the power half into square root of 1 minus r by a whole square, and again we can write it as n1 square root of 2 delta 1 minus r by a whole square. And this figure shows the structure of the graded index optical fiber multimode optical fiber. And here this figure A shows the variation of refractive index in optical fiber, and this figure shows the optical fiber in which these two light rays is propagating in two modes, and here this shows the what diameter variation of diameter. The change in refractive index causes reflection rather than total internal reflection. When light passes through a layer with a lower refractive index, the light will fold back to the fiber axis. The total internal reflection does not occur because reflection folds the light back into the fiber axis before it reaches the cladding boundary. For graded index multimode fiber, the light travels forward in the form of sinusoidal oscillations, and this shows the path of the light propagating
through optical fiber. Here we can see that when light propagates through optical fiber, then चूंकि अलग अलग डिस्टेंस पे इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होती जाती है, तो इसी कारण से ये लाइट जो है फोल्ड होने लगती है, मुड़ने लगती है और कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर पहुंचने से पहले ही ये वापस मुड़ जाती है और इस कारण से ये क्या होती है, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में लाइट रेज एक साइनसॉइडल वेव के रूप में आगे बढ़ती है। Like step index multimode fibers, different lights in a graded index multimode fiber travel along different paths. However, the speed of light propagation in graded index multimode fiber is different because the speed of guided light varies with the refractive index of the fiber core. Compared to step index fiber, the gradient index fiber is usually used in medium distance and a relatively high air speed communication system with higher cost. Now let us see the characteristics of this type of fibers. Core diameter is in the range of 50 to 100 micrometer and numerical aperture is smaller than that of step index multimode fiber, and the number of modes in graded index fiber is about half that in similar multimode step index fiber. It has minimum attenuation, intermodal dispersion is 0 but material dispersion is present. It has better bandwidth than multimode step index fiber. Let's see some advantages. Either an LED or a laser can be used as the source of light with graded index optical fiber. And disadvantages is the manufacture of graded index fiber is more complex and it is the most expensive fiber. Coupling fiber to the light source is difficult. फाइबर को लाइट सोर्स से कपल करना कठिन होता है. And application part is it is used in telephone links. Now let us see the classifications of optical fiber on the basis of material. We have already seen on the basis of material, optical fiber is classified in three parts. First one is glass fiber, second one is plastic, and third one is PCS. So let us see first glass fibers. The basic material of optical fiber is silica. हम ये मालूम है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका मूल जो मटेरियल होता है वह सिलिका होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड होती है, एंड इट हैज ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.458 at 850 nanometer. The materials of different refractive index are obtained by doping silica material with various oxides. यदि हमें अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की मटेरियल प्राप्त करने के लिए हम सिलिका को अलग अलग जो मटेरियल के ऑक्साइड्स हैं उसके साथ डोपिंग करते हैं और जिससे हमें अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मटेरियल प्राप्त होते हैं, फिर उसका हम एज ए कोर मटेरियल एंड क्लैडिंग मटेरियल यूज करते हैं. If the silica is doped with germanium oxide or phosphorus pentaoxide, the refractive index of material increases. सिलिका को यदि हम जर्मेनिया या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में डोप करें तो जो मटेरियल प्राप्त होती है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाती है. एंड सच मटेरियल्स आर यूज्ड एज ए कोर मटेरियल्स एंड प्योर सिलिका इज यूज्ड एज क्लेडिंग मटेरियल इन दिस केसेस. But when pure silica is doped with boron oxide and fluorine, its refractive index decreases. और प्योर सिलिका को यदि हम बोरिया के साथ डोपिंग करें या फ्लोरीन के साथ तो जो मटेरियल प्राप्त होती है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाती है और इस प्रकार जो प्राप्त मटेरियल है उसको हम क्लेडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और जो प्योर सिलिका है उसे हम कोर मटेरियल के रूप में यूज करते हैं. नाउ लेट अस सी प्लास्टिक फाइबर्स. In these fibers, perspex PMMA, that means polymethyl metaacrylate, and polystyrene are used for core, and their reflective index are 1.49 and 1.59. प्लास्टिक फाइबर में हम क्या करते हैं, perspex PMMA या पॉलीस्टीरीन को हम कोर मटेरियल के रूप में यूज करती हैं और फ्लोरोकार्बन और पॉलीमर या फिर सिलिकॉन जो रेजिन है
उसको हम क्लेडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। या हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस इज अचीव्ड बिटवीन द कोर एंड द क्लेडिंग मटेरियल, और यहाँ पर जो कोर और क्लेडिंग मटेरियल जो यूज करते हैं उनके बीच में हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस प्राप्त होती है। Therefore, plastic materials have large and numerical aperture of the order of 0.6 and large acceptance angles up to 77 degree. The main disadvantages of the plastic fibers are low cost and higher mechanical flexibility. The mechanical flexibility allows the plastic fibers to have large cores of diameters ranging from 110 to 1400 micrometer. They are temperature sensitive and exhibit very high loss. Therefore, they are used in low cost applications and at ordinary temperatures below 80 degrees centigrade. Now let us see about PCS. Plastic clad silica fibers are composed of silica cores surrounded by a low refractive index transparent polymer as cladding. The core is made from high purity quartz and the cladding is made of silicon resin and having a refractive index of 1.405 or perfluorinated ethylene propylene, yeah, that means it is called Teflon, having a refractive index of 1.338. Plastic claddings are used for step index fibers only. The PCS fibers are less expensive but have high losses, therefore they. Now let us see some merits of optical fiber. लो कॉस्ट, दैट मीन्स ये को ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है ऑप्टिकल फाइबर। स्मॉलर इन साइज, लाइटर इन वेट, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग होती है एंड नॉट डेंजरस, ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है। जैसे हम कॉपर वायर की यूज़ करें तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने की डर रहती है, करंट लगने की डर रहती है, आग लगने की डर रहती है, तो इस प्रकार की डेंजरस स्थिति ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होती है। वाइडर बैंडविड्थ, कॉपर वायर की तुलना में देखें तो ऑप्टिकल फाइबर से हमें ज़्यादा बैंडविड्थ प्राप्त होती है। नो क्रॉस टॉक, दैट मीन्स इसमें जो हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसको पता कर पाना या उसके साथ कोई दूसरे डेटा मिक्स कर पाना इम्पॉसिबल होती है। लो लॉस पर यूनिट लेंथ, यदि कॉपर वायर की तुलना में देखें तो पर यूनिट लेंथ जो लॉस होती है वो बहुत कम होती है। And these are the some merits of optical fiber and disadvantages यदि देखें तो installation and maintenance of optical fibers require a new set of skills. This is the only disadvantages of optical fiber in compared to copper wire, and they require specialized and costly equipment. All this means heavy investment. So these are the some disadvantages and these are the merits or advantages of optical fiber. Okay friends, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपके पास कोई क्वेरी है, यदि कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। एंड फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देन ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन।